हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक और डिफरेंट काइंड के फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिस फंक्शन को हम बोलते हैं जनरेटर फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डेकोरेटर फंक्शन और डेकोरेटर चेनिंग्स के बारे में बात करा है ना। तो अब जनरेटर फंक्शन क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है और क्यों ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम पहले उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बच्चा है, वो पार्ले जी के बिस्किट खाता है ना, और उसकी हैबिट है। तो उसको रूटीनली पर डे उसके पेरेंट्स जो हैं बोलते हैं कि चलिए भाई एक ले लीजिए आप बिस्किट और खाइए, है ना। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि जो एक पूरे किराने की दुकान है जहाँ पर सारे के सारे बिस्किट भरे हों, पेरेंट्स लाके एक अपने कमरे में रख लें, है ना। इट इज़ बेटर कि वो उस शॉप पर जाएँ, उस शॉप से एक अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ बिस्किट पैकेट्स जो है आपके पास लेकर आएँ और उसको बच्चे को दें। फिर जब ज़रूरत हो तो फिर उसको लेके आके रख लें। सिमिलरली हम घर पर वेयर हाउस नहीं बना रहे हैं, है ना। वी आर टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द स्टोर एंड वेयर हाउसेस, है ना, और उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा से उन चीज़ों को लेके आते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट जनरेटर का है कि भाई जनरेटर जो है मेमोरी को कंप्लीटली एट वंस यूज नहीं करता है ना। वो आपकी मेमोरी सेव करता है और एज पर योर रिक्वायरमेंट इट जनरेट द सीक्वेंस टू यू। तो इट्स लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, लेकिन पाइथन में हम जनरेटर फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इफ इट इज कंटेनिंग द यील्ड कीवर्ड देन इट्स अ जनरेटर फंक्शन। तो लेट बी इंप्लीमेंट द जनरेटर फंक्शन। सपोज मैं एक जनरेटर फंक्शन है उसको बनाता हूँ। मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है लाइक डिफाइन एफ, ठीक है, एंड दिस फंक्शन इज दिस वन। सो एक मिनट, लेट दिस इज heading the generator function. ओके। सो जब हमने इस फंक्शन को डिफाइन करा और मैं इस फंक्शन के अंदर यील्ड कीवर्ड का यूज करता हूँ ना, आई एम यूजिंग द यील्ड कीवर्ड doing, suppose this is returning a value. Similarly, I copy this and I check for yield is c. Okay, when I use this function, like suppose I am taking the reference of this function and returning the value, like मैं कॉल करता हूँ इस फंक्शन को और यहाँ पर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, लेट प्रिंट द टाइप ऑफ जी जो कर रहा है। सो कैन यू सी दिस, द फंक्शन इज जनरेटर, क्योंकि इसमें यील्ड कीवर्ड देखा, ये हर बार एक नई वैल्यू को आपके सामने जनरेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है ना। दैट इज व्हाट द रीजन कि दिस फंक्शन इज जनरेटर फंक्शन। तो हम कैसे इसकी इंडिविजुअल वैल्यू को रिटर्न करते हैं? लाइक आई एम कॉलिंग द प्रिंट नेक्स्ट और जी, है ना। लेट आई कॉपी एंड पेस्ट दिस। Again, I paste. So when I run this code, can you see this? The output is A, B and C. बट यदि मैं इसके बाद दोबारा से इसके नेक्स्ट वैल्यू जो कि इस फंक्शन के थ्रू जनरेटेड है उसको करता हूँ, सो कैन यू सी दिस, द स्टॉप इटरेशन, व्हाट डज इट मीन? इस जनरेटर फंक्शन से आप नेक्स्ट वैल्यू जो है आपके पास यील्ड नहीं हो पा रही है ना। सो कैन यू सी दिस, दिस जनरेटर फंक्शन is very much helpful to you to take the values not at once but as per the sequence generation, है ना। अब हम इस फंक्शन को जो यूज करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम, लेट मी टेक व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस जनरेटर फंक्शन, एंड आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द एडवांटेज ऑफ द मेमोरी, है ना। सो लेट मी चेक फॉर द मेमोरी। सपोज यदि मुझे जनरेटर फंक्शन जो कॉम्प्रिहेंशन से जनरेट करना है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था कि इफ वी आर डूइंग द टपल कॉम्प्रिहेंशन इट इज जनरेटिंग द जनरेटिंग फंक्शन, है ना। सो लेट वी डू द सेम। पहले मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करता हूं आपके सामने। सपोज मैं x फॉर x इन रेंज ऑफ 100 वैल्यूज लेता हूं। एट द सेम टाइम लेट आई टेक द सेम कोड एंड आई जनरेट अ टपल that is t, and I'm trying to have this comprehension, but this comprehension results in the generator. So when I check for the type of t,
टाइप ऑफ टी, कैन यू सी दिस द जनरेटर, है ना? यहाँ पर हमने केवल सिंपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया है और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जनरेटर फंक्शन करा है। इफ आई चेक द साइज ऑफ दीज टू data, like I have to import one module, that is sys, to check the size. When I print sys dot get size of, I call this for the L, get size of, sorry. Then I call this for T. When I run this code, so can you see this? The size for the L is 912 bytes, and for the generated the size is 120. But approximately, what is the goal? That we require these values. Suppose if I'm taking a value for x and I will be accessing these values from the L. Similarly, I will be accessing these value from the generators. So it is better to use the generator if you are having the large number of values. Like suppose I'm doing the 1000 here. When I run this code, so can you see this? So it's taking the initial memory instead of acquiring the complete memory. Suppose I do the same for this. So can you see this 9024? So it's continuously increasing, but generator function is taking the initial memory location, store the number of values, and as per the requirement, it generate the more values and give it to you in terms of the sequences. So this is what the advantage of the generator function over the normal function. यदि मैं जनरेटर फंक्शन अभी हमने जो देखा, मैंने आपको बताया यील्ड कीवर्ड के थ्रू करा और हमने इंडिविजुअल इटरेशंस डिफाइन करे और हमने वैल्यूज को रिटर्न नहीं करा, है ना? सो लेट वी सी दैट हाउ टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम जनरेटर फंक्शन. सपोज मैं एक कॉल करता हूं और मैं एक डिफाइन करता हूं जनरेटर जन, और मैं एक नंबर पास करता हूं. फॉर दैट नंबर आई वांट टू जनरेट सब आफ्टर अ पर्टिकुलर स्लीप ऑफ टाइम, मतलब हर 2 सेकंड के बाद आप क्या करें, नंबर जनरेट करके दे वो हमारे लिए, है ना? एंड व्हाट आई एम डूइंग, सिंपली field now, so it will return some value, है ना? What I need to do for a particular range x, in range of suppose 10, what I'm doing, I'm taking this generator function and I'm calling the next of gen 1 every time, next of gen, for suppose whatever the value is passed, I want the return of twice of that particular value. Suppose that is x. When I run this code, here, it should be 2 into x. Sorry, no file is expected here. Okay. So when I execute this, can you see this? After a particular time and sleep of 2 seconds, it is giving you the even number generated in terms of the 2. तो जितनी भी रेंज थी, हमने उस रेंज में उस जनरेटर से वैल्यूज को रिटर्न कराया कंटिन्यूसली, एंड वी आर हैविंग दिस आउटपुट, यू कैन सी हियर टिल द 10 वैल्यू. सो दिस इज व्हाट द वन एप्लीकेशन ऑफ द जनरेटर. let we define one program. Let me do one program. एंड मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम है, एक फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है ना. सो what is the better option here? Because the Fibonacci series says that the number of the previous two numbers sum would be the next number. So what we need to do, we need to maintain this previous two numbers and do the sum, and we will be generating the next sequence. So instead of doing it with the help of normal function, it is better to have by using the जनरेटर. तो हम जनरेटर के थ्रू इसको कैसे करेंगे? लेट आई डिफाइन वन फिबोनाची सीरीज FIB फंक्शन, एंड व्हाट आई विल डू,
I initialize two values here, a comma b is equal to 0 comma 1. हम 0 1 से initialize करते हैं. And what I will do, I will run this code while the true situation. मुझे क्या करना है? I will be getting the a value, just simply replacing a comma b is equal to b comma a plus b. और मैं क्या कर रहा हूं मैं हर बार ए को रिटर्न कर रहा हूं जब तक कि ट्रू है, और यही लॉजिक है हमारा जो हमारा फिबोनाची को जनरेट कर देगा. सो इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस विद द नॉर्मल फंक्शन, इंस्टीड ऑफ डूइंग इट विद अ लिस्ट ओनली, या नॉर्मल फंक्शन के थ्रू करने से अच्छा है हमने इसको किसके थ्रू करा? जनरेटर से. कहीं ना कहीं हमने मेमोरी का एडवांटेज भी देखा. इन अपकमिंग एग्जांपल वी विल बी seeking for the time advantage also. So this is helpful in the performance as well as the memory utilization improvement, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ फॉर एफ इन एफ आई बी फंक्शन है, हमने कॉल करा है. मैं क्या करता हूँ, इफ एफ इज ग्रेटर देन 100, ब्रेक करिए, अदरवाइज आप क्या करिए, प्रिंट एफ. मतलब वी वांट द फिबोनाची सीरीज till the 89, that if it is greater than 100 you break it. So it is generating instead of having at the same time the complete memory access. It's taking a limited amount of memory and giving you the answer. So this is the one of the application of a generator function. Let me take one example. Suppose for the data analytics purpose, we are trying to have one kind of data generation, है ना? Suppose you are not able to collect the data, है ना? And we want to do a one kind of data generation. So what is the situation? Which one is the best case? हमें कैसे करना चाहिए उसके लिए, है ना? So we try to implement it with the help of normal function, and then we try to implement it with the help of a generator function. So suppose उसके लिए मैं दो modules import करता हूँ, random and time. We will check for the advantage. Ssuppose मैं names जो है वो लेता हूँ, मैं जो डेटा जनरेट कर रहा हूँ ना, सपोज दैट इज फॉर द नेम्स एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना? तो नेम्स क्या रहेंगे हमारे, मान लीजिए नेम्स हैं आपके, हियर आई एम टेकिंग राहुल, हियर आई एम टेकिंग वासु, देन आई एम टेकिंग राम. These are the three names here to generate the population kind of activity. और मैं मान के चलता हूँ इन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो रैंडम है हमारे पास, है ना? वो मार्क्स हैं आपके फॉर एग्जांपल 100, 50 and 20. What is my goal? With these three data, I want to generate the combination of data, and I want to generate the big list of the data by this data only, है ना? तो हम किस तरीके से एक काइंड ऑफ डेटा जनरेट करेंगे हमारे किसी भी डेटा एनालिटिक्स एक्टिविटी के लिए, या मॉडल सिमुलेशन से मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे. तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. सपोज वी जनरेट दैट डिफाइन लिस्ट फंक्शन. हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसमें हम लिस्ट करते हैं कि कितने इसको हम डिफाइन लिस्ट की प्लेस पर L1 करते हैं इस फंक्शन को, है ना? एंड आर ट्राइंग टू हैव द डेटा. तो लिस्ट जनरेट होगी. इस लिस्ट को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं? वी आर जनरेटिंग दिस लिस्ट विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. तो सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई आप जो डेटा जनरेट कर रहे हैं उन सारे नेम्स और पर्सन्स का डेटा जनरेट कर रहे हैं जो आपके क्या है, वो नेम और मार्क्स के करस्पॉन्डिंग है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जनरेट द स्टूडेंट्स के करस्पॉन्डिंग. मेरे को एक फील्ड लेना है, दैट इज स्टूडेंट आईडी. एंड फॉर दैट आई विल डू व्हाट आई विल डू, फॉर दैट I will take one value that is for I in range of, जितने भी मुझे जनरेट करना थे वो रेंज क्या है, मेरी नंबर है जो मैंने पास किया हुआ है. अब फॉर इंडिविजुअल आईडी वी विल बी पासिंग द डेटा I, एंड फॉर नेम of the student what I will do, I will use this random module, and this random module is having one function.
And for this random module, we are having one function, random.choice. Pass the names in this. So corresponding student ID, it will be taking a name there. And with this, what I want the marks of the student also, है ना? तो हम किस तरीके से उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स को लेंगे? Just a minute. For that, we take one more key, that is marks. For these corresponding marks, we will be calling this random.choice function again, and this will be taking the marks here. So can you see this? We have defined one list function that is creating the students dictionary, and what we are doing, we are just simply adding result.append the students. तो हम स्टूडेंट की लिस्ट को जनरेट कर रहे हैं. Let me check for this function it is working fine or not. So I'm calling this L1, and suppose I'm writing here 5. When I run this code, so for I in range of num, okay, fine, that is what syntax error. Okay, when I run this again, the I should print the result here. Inside this, and result here. When I run this code, can you see this random data has been generated? One ID is 0, name is Ram, and marks are 100. And then ID is 1, and so on, so on. So we could be able to generate the multiple data with the help of these available values, है ना? क्योंकि हमने 5 ही डेटा जनरेट करे. यदि मैं यहाँ पर 10 करने की कोशिश करता तो we were able to attempt the 10 values here. So this is what the data generation activity. अब इसको हमने करने के लिए क्या करा है, केवल एक फंक्शन लिया है जो नॉर्मल फंक्शन है. Let we do the same activity with generator function, है ना? अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के कोड को लेता हूं. Simply I write here name Jan because this is a generator function. What I need to do, मैं रिजल्ट जो हमारा है वो वैसे ही रखूंगा, मैं रेंज में रखूंगा मेरा. ठीक है. अब इसमें रिजल्ट लेने के प्लेस पर व्हाट वी विल डू, हम सिंपली जनरेटर फंक्शन में जो अभी तक हमने किया हुआ है, हम हर बार इस फंक्शन से आपके स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो यील्ड करा देंगे. सो व्हाट आई विल डू, यील्ड. So we will be having students. So when you will do the next, you will have every student there, है ना? तो उस num की वैल्यू तक आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, है ना? जैसे कि मैं लाइक 10 5. When I run this code, so you can see this the generator object there, and for this individual generator object you have to access the print. So you could be able to get first value. Similarly, if for I in Jan, you will be able to achieve the values. So can you see this? This is what the same activity we have done with the help of generator function. This is what the same activity we have done with the help of normal function. Now we check. Previously we have checked for the memory utilization. कहीं ना कहीं हमारे लिए एडवांटेज मिल रही है, मेमोरी यूटिलाइजेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं जनरेटर के थ्रू,
है ना? लेट मी चेक फॉर द टाइम आल्सो। यहाँ पर अब मैं 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, दैट इज़ T1 इज़ इक्वल टू टाइम डॉट क्लॉक एंड a minute. It requires, I think the depreciation is there in the time, that it should work. That is time dot clock, and suppose that is T1. Similarly, I am calling here L1 with suppose for 100 values, and then I call T2, that is time dot clock 2. Then I print taken by normal function is minus T2. So when I run this code, it's a T1 minus T2. When I run this code, so can you see this generation? And the expected time is here. There should be T2 minus T1, not T1 minus T2. Okay. So here we have print the result. That is what the reason in this function. I should remove it. So you are getting this value here. है ना? Let me check the same code for the 100 values with the generator. Okay. Here T3 and the code is T4, and here we are calling a gen function, and it should be the T4 minus T3. When I run this code, can you see this? It's a 0.2, 2.7 raised to power 10 raised to power minus 3, and here 5.2 raised to power minus 5. So somehow the generator function is able to achieve a good performance also. These are some warnings, and because this module of time has been updated, so it's giving the deprecation warning to us, but it doesn't matter right now because our task has been completed here. तो आप अपडेटेड लाइब्रेरी का भी इंपोर्ट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हैं आप, है ना? सो दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फंक्शन एंड जनरेटर फंक्शन. So what is the advantage of the generator function here? We could be able to achieve not only the memory utilization properly, memory performance भी improve करी हमने एक CPU परफॉर्मेंस भी हमारी इम्प्रूव करी, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो भी सीक्वेंस की हमें आवश्यकता होती है वो जनरेटर फंक्शन जो है हमें जनरेट करने के लिए कैपेबल हो सकता है. So for this video, it's all from my side. Thank you.